morning everyone. Welcome to Maths online class. In today's video I will be solving the some questions on the basis of the expanded form method and some questions on the basis of the exponent law from the chapter 2, which is the exponent. So students, listen and look carefully how we can solve the exponent questions by without exponents law and with exponent law, and what is the difference both, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो एक चीज होती है जब आप विदाउट एक्सपोनेंट सॉल्व करोगे, दैट इज अ टाइम टेकन क्वेश्चन. आप एक्सपोनेंट लॉ के साथ सॉल्व करोगे, वी कैन सॉल्व इजिली एंड इन टाइम any questions. So look, the first question is here. What is the question? Find the value. What is the question is here? Minus 3 upon 5, 4 and multiply by 1 upon 3 raised to the power 3. What is it given here? Here is given minus 3 upon 5 raised to the power 4 and 1 upon 3 raised to the power 3. The question is saying find the value. So first we match the base. You know, in the exponential form which one is the base and which one is the power. So this is the base and this is the power. Understood? So 1 upon 3 is the base and 3 is the power. So here look here, this is the minus 3 upon 5 and this is the 1 upon 3. Both base are different and जब base difference हो जाएगा और power भी difference है, तो we cannot use any law. So here we solve by only exponential form. So minus 3 upon 5 multiplied by minus 3 upon 5. So we expand according to the power. So what is the power of this question? Minus 3 upon 5 raised to the power 4. इसकी power क्या है? 4. So we expand according to the power. Minus 3 upon 5 multiplied by minus 3 upon 5 multiplied by minus 3 upon 5 and multiplied by minus 3 upon 5. ये जो है इसको हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स. सो माइनस 3 1 2 3 4. ओके, अब नेक्स्ट 1/3 है, पावर 3. देखो आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पावर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. हमने क्यों मल्टीप्लाई किया इसको 3 टाइम्स? अरे हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया because its power is a 3. Understood? Then minus 3 multiplied by minus 3 multiplied by minus 3 multiplied by minus 3 and then 1 multiplied by 1 multiplied by 1. Understood? These are a numerator. What is this? These are a numerator and now multiply by 5 and then multiply by 3. These are a denominator. After multiplication सब कुछ वही रूल होगा जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we observe the denominator and numerator. अगर कोई नंबर्स न्यूमेटर्स और डिनोमिनेटर में से डिविजिबल हैं, so we can cancel them. उनको हम कैंसिल कर सकते हैं. So look here, this is the, don't think about the minus now. Minus, this is a 3 3 3 3 3 3. In denominator we have 3 3 and in numerator we have a 4 3. So we can cancel the first, this one, from the second, this one, from the third, this one. All the threes are cancelled here. And what is left here? In numerator, minus 3, 1, 1 and 1. And in denominator, how many? 4 5s. 4 5. Then we multiply. What is left here also? 1. Means when 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3. All the others are 1 1. Minus 1. 1 2 3 4. What? 4. जब भी नेगेटिव नंबर किस में हो, इवन में, तो उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव. सो हाउ मेनी नेगेटिव हियर इज 4 नेगेटिव. सो 4 नेगेटिव आंसर विल बी पॉजिटिव. मींस 4 नेगेटिव मींस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देन दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस प्लस, सो प्लस प्लस प्लस. सुनना है? देन 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, and you know then this is a 3 and now 5 5s are 25,
25 5s are 125 and 125 5s are 625. So this is the answer of this question. By expanded method means expand according to the place. Sorry, according to the power. Now next question is simplify. Simplify. So what is here? 3 raised to the power 2 minus 2 raised to the power 2 divide by 1 upon 5 raised to the power 2 power 2. So these are brackets. Simplify means we can use the BODMAS rule. हम BODMAS rule को use कर सकते हैं. Then 3 raised to the power 2 means 3 multiply by 2 times. और जब आपने 3 multiply by 2 times किया तो क्या मिला? 3 3 जा 9 and then 2 raised to the power 2 means 2 multiply by 2 times, and then we get 2 multiply by 2 times, we get the 4. So this is the 4. Understood? Then divide 1 upon 5 power raised to the 2. So ये number कितने बार multiply हो जाएगा? 2 times. Then 5 divide by 25. How we get the 5 here? By subtraction, by difference of 9 and 4. So what will be the difference of 9 and 4? छोटे बच्चे तो नहीं, तुमको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बताना पड़ेगा. 9 minus 4 5. Then this is the division, and you know how we can solve the division. 5 multiply by 25. अब ये 25 कैसे हो गया? 25 कैसे हो गया भैया? 25 when we write the reciprocal of 1 upon 25, then we get 25, or you can write the 25 upon 1. Understood? And then 25 5s are 125. So this is the answer. Now next is a reciprocal of different type question. So how we can write reciprocal of? Ab reciprocal, you know that how we can write the reciprocal of the fraction or rational number. Reciprocal means क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर आपके पास है उसको स्विच करके राइट करना. मींस न्यूमरेटर राइट एज अ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर राइट एज अ न्यूमरेटर. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, बट हियर इज डिफरेंट. हियर इज गिवन पावर. सो नथिंग, कुछ नहीं सोचना है पावर के बारे में, सब कुछ वही रहेगा. पावर तो पावर अपनी जगह रहेगा, पावर तो पावर ही रहेगा. उसका हम क्या कर सकते हैं? वो होगा, we can write only the reciprocal of minus 3 upon 8. So minus 3 upon 8 whole the power 3 when we according to the power minus 3 raised to the power 3 राइट कर सकते हैं. 8 upon 3 raised to the power 3 राइट कर सकते हैं. दोनों को हमने अलग अलग राइट कर लिया. Then reciprocal of minus 3 upon 8 power 3, it will be 8 upon minus 3 raised to the power 3 minus raised to the power 3. Understood? अभी क्या हुआ? यहां से माइनस यहां कैसे हो गया? Why we will get the minus here? Because you know we cannot write the any denominator with the negative sign in answer. So when we write the, how we can convert in a positive form? कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव फॉर्म में? Multiplying by -1, and you know very well from the class 7th. So minus 8 upon 3 raised to power 3. So this is the reciprocal of this number. Understood? Now question number 4. 4 raised to the power -1 divided by 3 raised to the power -1 and whole the power is a -2. The question is saying find the value. So look here, what is here given? 4 raised to the power -1 and 3 raised to the power -1. -1 से कुछ याद आया? Which law is here? This is the negative rule, negative law of exponent. अगर किसी भी नंबर का पावर क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है, तो उसको कैसे राइट कर सकते हैं? सो वी कैन हियर यूजिंग विच लॉ? x माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर n और x अपॉन n पावर अपॉन n. आप इसको यूज कर सकते हो यहां. तो क्या हो गया ये? 4 raised to the power -1 डिवाइड बाय 3 raised to the power 1. मतलब we can write the 1 upon 4 divide by 1 upon 3 whole the power -2. ठीक है, ये यहां हमने ये यूज किया. कौन सा रूल? सेकंड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, मींस नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. देन 1 upon 4
and division convert in a multiplication. 3/1 3/1 means write the reciprocal. अब तो आप हैबिचुअल हो गए, you understand how what is the reciprocal and how we can solve the any division of fraction or rational number. So 1/4 multiply by 3/1, then we get 3/4 raised to the whole power -2. Okay, फिर whole the power क्या है -2. फिर से एक बार वही रूल, what we using here we using the which one rule, a/b minus n. मतलब आप इसको ऐड कर सकते हो b/a होल द पावर n. उसको उल्टा कर दो और पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बदल जाएगा, 4/3. आप जस्ट इन दोनों को स्विच करोगे, जैसे स्विच करोगे आप इसका अपोजिट ऐड करोगे तो ये अपने आप अपोजिट हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा +2. एंड देन मीनिंग ओपन द ब्रैकेट्स आर अकॉर्डिंग टू द पावर. हमने क्या ओपन किया, 4/2, 3/2, 4 4 16 and 9. Then answer will be 16/9. Understood? Now last question of this video. By what number should 2/3 be multiplied so that the product is 4/27 इसमें से कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते, किसमें 2/3 में कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाए, उसका आंसर मिल जाए आपको 4/27. बहुत इजी है, आपसे कह ही रहा है कि वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना, तो कहीं से कुछ खोजना नहीं है. अगर कुछ खोया है ना तो क्या करोगे, कैसे पाओगे उसको, यक्स समझ लो उसको. सो लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर इज bx. लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर bx. देन मतलब क्या हुआ, इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इक्वल दिखा दें तो हमको वो नंबर मिल जाएगा. यहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम हियर वी गेट द इक्वेशन. then x multiplied by 2/3 raised to power -2. So 4 is equal to 4/27. Understood? First and then इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट x multiplied by 3/2 raised to power 2. इसका अपोजिट हो जाएगा, ये -2 है, -2 अपोजिट क्या करिए, प्लस हो गया, 3/2 raised to power 2 and 27/4 हो गया ये. Why? Because here is a -1. When we open the bracket, then we get the 27/4 raised to power 1. And इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, x मल्टीप्लाई बाय, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, पावर को ओपन कर दो. अब पावर जो ओपन होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई. गुड, क्या होता है, मल्टीप्लाई. सो व्हेन वी ओपन द पावर देन मल्टीप्लाई, ओपन बाय द मल्टीप्लिकेशन ओनली. 3/2, so 3 raised to power 2 means 9/4. 27/4 is equal to, means x multiplied by 9/4 is equal to 27/4. So x is multiplied by 2/3. What? So x is equal to, अपने यहां क्या मिला, x यहां मिला x multiplied by 9/4 is equal to 27/4. ये आपको इक्वेशन मिला. So this is a question and you know how we can solve the equation by the transposition method. और आपको पता है कौन सा नंबर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, which one is a with variables. So 9/4. So 27 divide by 9/4. Divide कैसे, how we divide, because this here is a multiplication and you know rule of the transposition method. When we transport the number left to right or right to left, then sign it will be changed. 27 then multiply and write the reciprocal of the 9/4, 4/9. So 4 and 4 is a cancel, 4 cancel हो गया ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, then 9 1 जा and 9 3 जा, then we get the 3. क्या मिला हमको, 3. So students, this was all about for today, and today's your homework is evaluate. First question is a minus what, 3 raised to the power -1 divided by 4 raised to the power -1 whole the power 2. And second, 11/7 minus 4 multiplied by 7/44 raised to the power -4. And then 3/5 raised to the power -2 and whole the power -4. So these are your homeworks, and you solve your homework and write the answer in a comment box. Everyone watch the full video. Understood? So students, thank you and take care.